Hello everyone and welcome to RUPINDE'S online classes and courses, and today I'm going to discuss a very important poem, and the title of this poem is This is a Photograph of Me. Yes, it's really important for the graduation students, so without wasting any more time, let's start with the poem. So this is photograph of me. And this is a picture that I have taken from Bing, and it is going to help you in understanding what the scenario of the poem is. There is a photograph that is being described in the poem, and that is quite similar to the picture given on the screen. This is composed by Margaret Atwood, who's a famous Canadian poet. And let's know more about her. So she is the poet, the great composer, the great bard behind the poem. This is a photograph of me. She is a Canadian poet, I have just told. She has to her credit, she's really famous. उसने बहुत कुछ create किया है इन्होंने. And she is alive. She took birth in 1939 and she is alive till date, enriching the wide and ever-growing reservoir of English literature. So she has to her credit 18 books of verse. So she has written in total 18 collections of poetry, 18 novels, 11 books of non-fiction, 9 short story collections, 8 books of children's literature, and 2 graphic novels, with numerous other writings in prose and poetry. She has even won Booker's Prize twice, and many of her writings have been adapted into movies or films. So what is the central idea of the poem? This is a photograph of me. So the central idea is really important and concerned with the theme of belongingness. This is a thought-provoking poem, and it deals with the theme of belongingness. Belongingness, which highlights that the poet, the creator, is everywhere in the creation. The speaker describes a photograph with all this natural scenery that has been dilapidated by the time. So apparently it seems that it is about a photograph. ऐसे लग रहा है कि एक photograph के बारे में है ये, और उसकी condition ज़्यादा अच्छी नहीं है, dilapidated condition में है photograph, काफ़ी ruins, आप ruined condition कह सकते हैं, destroyed, थोड़ी बदतर हालत में है पिक्चर जो है, फोटोग्राफ जो है. और स्पीकर यहाँ पे हमें शॉक कर रहा है, the readers, with a remark that it was taken the day after the speaker drowned. So how was it possible कि जिस दिन स्पीकर डूब गया उसके बाद ये पिक्चर ली गई थी? In the end, it seems as if it is the house that is speaking, mingling with the tone of the poet. It highlights the fact that creator is one with the creation. So there are two versions. One is that it is the voice of the poet, and it is the poet who wants to show that the creator becomes one with the creation. और अगर कोई आर्टिस्ट कुछ क्रिएट करता है वो उसके कण कण में बसा हुआ होता है, and this is what is being shown in the poem. But on the other hand, there are some critics who think that it is the house that is speaking. घर बोल रहा है वो, घर अपनी पिक्चर, अपनी व्यथा बयान कर रहा है कि जिस दिन घर टूट गया, टूट के उस पुराना घर जो फ्रेम हाउस, एक झोंपड़ी बनी हुई है, जिस दिन वो लेक में मिल गया और नया घर कंप्लीट हो गया, तो वो अपनी स्टोरी सुना रहा है कि कैसे द ओल्ड हैज बीन replaced by the new. So these are two versions about the poem that are quite prevalent and well known. So let's move to the next one. So what are the main points that are described in the poem? First of all, it is a free verse. Free verse means this poem is free from the constraints of writing poetry. जैसे
राइमिंग स्कीम होती है, मीटर होता है पोइट्री की लाइंस में, तो ये फ्री वर्ड्स का मतलब है इट इज फ्री फ्रॉम ऑल सच रेगुलेशंस. देन द पोएम इज सब्जेक्टिव इन नेचर. मन की बात हो रही है यहाँ पे, पोएट अपने मन की बात, स्पीकर अपने मन की बात आगे रख रहा है. यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, आई. यहाँ पे क्या है पोएम में, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव को यूज किया गया है. I stands for the poet, speaker or the house itself. तो जो I वर्जन यूज हुई है यहाँ पे, इसका मतलब है या पोएट की आवाज है, या वो स्पीकर बोल रहा है, या वो हाउस की खुद की आवाज है. And personification is visibly used in the poem. Personification means the technique of giving human qualities to a non-living thing. So it means that यहाँ अगर घर की आवाज घर बोल रहा है, it means कि personification apparently clearly use हुई है. And this is a literary device that is being used in the poem personification. As per the second version, that it is the house that is speaking to the audience. So what you have to write in the reference to the context? So again, these lines have been taken from the poem. This is a photograph of me. This even M has to be capital. This would be capital. Written by a famous or renowned, eminent. So आप famous लिख सकते हैं, renowned लिख सकते हैं, eminent लिख सकते हैं, सबका meaning है मशहूर. एक बहुत ही नामी poet ने लिखी है, and she is Margaret Atwood. The poem deals with the importance of an artist or creator. तो poem और किसके साथ deal कर रही है? All these lines are important and you can add these lines in the central idea, or these lines can be used in any of the answers. So the poem deals with the importance of an artist or the creator in his creation. कि कैसे एक artist और एक creator अपनी creation में छुपा हुआ होता है. It is a complex poem, no doubt. It seems to be very simple. ऐसे लग रहा है जैसे 26 lines और बहुत आम सी बात है, एक फोटोग्राफ को ही explain किया हुआ, but it's complex. It is unclear and incomplete. The given poem is emotional, definitely. जहाँ पुराने घर की बात हो रही है कि I was drowned, तो इमोशनल है, नॉस्टैल्जिक है. इट इज डिस्क्रिप्टिव, यहाँ डिस्क्राइब कर रही जा रही है एक चीज, और वो है सीनरी. एक फोटोग्राफ में क्या क्या एलिमेंट्स शामिल हैं उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है. एंड इट इज मिस्टीरियस, क्योंकि इस पोएम में एक लाइन आने वाली है दैट दिस पिक्चर वाज टेकन आफ्टर आई गॉट ड्राउंड. आई एम जस्ट सेइंग द थिंग इन सिंपल इंग्लिश. पोइट्री की लाइन्स हम आगे देखेंगे. व्हाट पोइट हैज सेड एग्जैक्टली, पोएम में ही पोइट्री की लाइन यूज करेंगे हम वहां पे. तो मतलब है उसका कि मेरे डूबने के एक दिन बाद ये पिक्चर ली गई थी, विच इज अपरेंटली क्वाइट मिस्टीरियस. ऐसे कैसे हो सकता है कि पोएट के डूबने के बाद, मतलब मरने के बाद ये पिक्चर ली गई है, तो डिस्क्राइब कौन कर रहा है? देन व्हाई आई हैज बीन यूज्ड फॉर द स्पीकर और द नरेटर. It is based on the theme that maker is present everywhere in the creation, and in the given lines the poet says. तो इसके बाद reference to the context के बाद explanation start करनी है, and let's begin with that. So these are the lines. It was taken some time ago. तो कुछ समय पहले ये पिक्चर ली गई है. At first it seems to be a smeared print. ऐसे लग रहा है जैसे एक smeared print है. Smeared, for example, if you have you have to participate in a play and you have to become a yogi, what will you do? You will put some powder or some ash on your hand and you will do like this. This is called smearing. So as if somebody has put some dust on the picture. ऐसे लग रहा है smeared print है, clear नहीं है. Blurred lines and green flecks blended with the paper. तो लाइंस ब्लर्ड हो चुकी हैं, पिक्चर बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है. आप इमेजिन करिए अगर बहुत साल पहले कोई पिक्चर ली गई थी, वो वाटरप्रूफ जैसे आजकल की डिजिटल पिक्चर्स हैं वैसी नहीं है. अपने दादी माँ की या अपने पेरेंट्स से कोई पुरानी पिक्चर निकलवाइए, देखिए हाउ इट इज मॉइस्चर उसको खराब कर देता है, उसके ऊपर छोटे छोटे ब्राउन डॉट्स आ जाते हैं. तो ऐसे
इस पिक्चर का प्रिंट उससे भी ज़्यादा थोड़ा ख़राब है, ब्लर्ड लाइन्स हैं उस पर और कुछ भी विजिबली नज़र नहीं आ रहा. देन एज यू स्कैन, अगर आप इसको स्कैन करोगे बहुत क्लोजली, बहुत ध्यान से देखोगे, यू सी इन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर, आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर में क्या दिखेगा? अ थिंग दैट इज लाइक अ ब्रांच, एक ऐसी चीज जो एक टहनी, किसी चीज की ट्विग, ब्रांच दिखेगी, पार्ट ऑफ अ ट्री, या वो बाल्सम या स्प्रूस, इनमें से कोई एक ट्री है. इमर्जिंग एंड टू द राइट हाफ वे अप व्हाट ऑट टू बी अ जेंटल स्लोप, अ स्मॉल फ्रेम हाउस. और दूसरी तरफ क्या है? एक स्मॉल फ्रेम हाउस है, एक लकड़ी का बना हुआ घर है, जैसे पिक्चर आपको इस वीडियो के बिल्कुल बिगिनिंग में दिखाई गई थी, तो वैसी मिलती जुलती सी पिक्चर है जो यहाँ डिस्क्राइब हो रही है. इन दीज लाइन्स द स्पीकर सेज दैट, यहाँ सेज इज मिसिंग, सो हियर यू वुड ऐड द स्पीकर सेज. स्पीकर क्या कह रहा है यहाँ पे? हमें स्पीकर क्या बता रहा है? सेज दैट देयर इज an old photograph, एक old photograph है जिसकी बात हो रही है. It was taken long time ago, यहाँ पे some time ago है, तो some time में तो इतनी चीज खराब नहीं होगी, तो it means that ये काफी समय पहले की ली गई पिक्चर है. It was taken long time ago. It is a smeared print, उसका print smear है. It has a smeared print कह सकते हैं, या it is a smeared print. It has a faded lines, तो blurred lines का मतलब lines fade हो चुकी हैं, faded lines है उसके ऊपर. There are some gray spots on the photo. If we look at it closely, we find a branch of a tree on the left side. एक तरफ हमें एक ट्री की ब्रांच दिखेगी. The tree looks like an evergreen tree. और यहाँ पे ये जो हम evergreen tree की बात कर रहे हैं, it means यहाँ पे अगर कोई tree दिख रही है, this is interpretation from my side that I have added here, and you all can give your own interpretations, because in poetry whatever you say is all correct unless you provide a proof, and the proof is the lines of the poem themselves. So it shows how photographs are forever. So why something that is described, that is captured in the photograph is forever? Because जो भी, अगर आज मैं अपनी कोई पिक्चर ले लूँ, I'll stay as it is in the picture. Only the print may get dilapidated, या वो थोड़ा खराब हो सकता है, but I will remain as young as I am today, and that is the beauty of the pictures. They capture the memories. And on the right side there is a small hut on the gentle slope. So this is the explanation of these first 12 lines. Let's move to the next lines. So it is the background. In the background there is a lake. So background में क्या है? Lake है, and beyond that some low hills. तो अब सिनेरियो डिस्क्राइब हो रहा है कि बैकग्राउंड में एक लेक है और उससे परे क्या है? स्मॉल हिल्स हैं. अगेन कीप इन माइंड द पिक्चर दैट आई हैव शोन यू इन द वेरी बिगिनिंग. The photograph was taken the day after I drowned. This is the line that I was referring to in the beginning. The photograph was taken the day after I drowned. मेरे डूबने के एक दिन बाद पिक्चर ली गई थी. But how is it possible? I am in the lake, in the center of the picture, just under the surface. I am in the lake. मैं लेक में हूँ. In the center of the picture. पिक्चर के बिल्कुल सेंटर में, just under the surface. Surface के, सतह के, पानी की सतह के बिल्कुल नीचे हूँ मैं. How is it possible? What the poet wants to say here. So in these lines, the poet says that in the background of the photograph, there is a lake. Beyond the lake, there are small hills. The poet says that the photograph was taken a day after she drowned. Or if you say the speaker says it. After the drowning of the speaker, the photograph was taken. How mysterious is it? It is not possible, therefore, and this thing is not possible, and therefore the poem is called mysterious. इसीलिए इसको complex या mysterious, incomplete या unclear कहा जाता है. The poet says that she is in the lake in the center of the picture. So you can say the poet says, or the speaker says, the narrator says that she is in the lake in the center of the picture, just under the surface. बिल्कुल surface के नीचे है. Perhaps it means that she is in the hut and its reflection is falling in the center of the lake. तो यहाँ मतलब ये भी हो सकता है
कि जो वो हट है, जो वो एक स्लोप के ऊपर घर बना हुआ है, वहां पे पोएट है और पोएट की जो रिफ्लेक्शन है वो पानी में पड़ रही है, एंड दैट इज व्हाई शी इज सेइंग आई एम देयर इन द लेक। और मेरे डूबने के बाद, इट मीन्स कि पोएट जो है वो अपने ख्यालों में डूबी हुई है, शी इज ड्राउन्ड इन हर थॉट्स, एंड दैट इज व्हाई शी इज सेइंग कि उसके डूबने के बाद ये पिक्चर ली गई थी। तो ये ड्राउनिंग जो है वो फिजिकल ड्राउनिंग ना होके दैट इज सिंबॉलिक ड्राउनिंग, जिसका मतलब है कि वो अपने ख्यालों में डूबी हुई है। इट सीम्स दैट शी इज ड्राउन्ड इन द थॉट्स। तो यहाँ पे दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शी इज ड्राउन्ड इन द थॉट्स। तो ये ड्राउनिंग फिजिकल ड्राउनिंग ना होके इट इज द सिंबॉलिक ड्राउनिंग। It is difficult to say. It's difficult to say where precisely or to say how large or small I am. तो यहाँ पोइट हमें कह रही हैं कि स्पीकर हमें कह रहा है कि ये डिफिकल्ट है बताना, मुश्किल है बताना बिल्कुल करेक्टली, प्रिसाइजली, कि एग्जैक्टली कितना बड़ा या कितना छोटा इमेज रिफ्लेक्शन जो है वो पोइट का दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द वाटर. The effect of the water on the light is a distortion, but if you look long enough eventually you will be able to see me. कि अगर आप बहुत अच्छे से क्लोजली देखोगे तो आपको डेफिनेटली वो चीज देखने के लिए. तो इन लाइंस का मतलब क्या है कि मुश्किल है ये बताना कि कितनी लार्ज या स्मॉल वो रिफ्लेक्शन है, इमेज है, क्योंकि जब भी पानी के ऊपर लाइट पड़ती है तो डिस्टॉर्शन हो जाती है, आपको कुछ भी दिखता नहीं है, आपकी आंखों में लाइट पड़ती है. और अगर पोएट या स्पीकर हमें कह रहा है कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो वील कम टू नो कि यहाँ पे वील बी एबल टू सी, हमें दिखाई पड़ेगा कि पोएट कहाँ है या इमेज रिफ्लेक्शन कहाँ है. सो इट इवन वर्क्स कि जब हम साइकोलॉजिकली कुछ सोच लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने सोच लिया दैट देयर इज द इमेज ऑफ अ रैबिट इन द मून, तो मुझे वो दिखना शुरू हो जाएगा. दिस वर्क्स ऑन आवर साइकोलॉजी. तो अगर हमें पोइट कह रही है कि आई एम देयर इन द पिक्चर, आई एम देयर विजिबल, सो डेफिनेटली हमारे इमेज में वो, दिमाग में वो इमेज बैठ जाएगी एंड वील बी एबल टू सी वेयर द पोएट इज. So in these lines the poet says, it is difficult to say where she is in the lake, it is not possible to tell the size of her reflection, क्योंकि जब पानी के ऊपर लाइट पड़ी है तो डिस्टॉर्शन हो चुकी है. It seems that she is in the hut and it's the reflection and its reflection is falling in the center of the lake. तो ये भी पॉसिबल है कि पोएट जो है वो घर में है और घर की रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ रही है. The light is also falling on the water which is creating a distortion. So it is difficult to say anything. It is difficult to see, it is difficult to see anything in water. तो पानी में कुछ भी clearly देखना मुश्किल है, but now we can only imagine. So यहाँ कहीं ना कहीं importance of imagination जो है वो भी highlighted है. But she says that if we look carefully at the picture, we will be able to see her. तो अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे हमें वो दिखाई पड़ेगी. On the whole, we can say that our imagination can do wonders. And it is only this imagination that helps us to see certain creatures, certain images in the clouds. आप सबने ही देखे होंगे clouds में कभी ना कभी हमें कोई ना कोई pictures दिखती हैं. तो that is only based on our imagination. So let's move on to the next slide. That was the end of the poem, and now let's discuss some of the questions which are important. Otherwise, even if you have studied the poem very clearly, very closely, you have read it, you will be able to answer all the questions, but there are certain questions that I have added into this video. So first is, what kind of picture it is? Why does the poet mean by scanning it? So instead of this, it should have been, what does the poet mean by saying to scan it? Why does the poet is asking us to scan it? This is, what does the poet mean by scanning it? तो क्या मतलब है इसका? The photograph is an old one. तो कैसी पिक्चर है? पुरानी पिक्चर है. Nothing is clear. कुछ भी क्लियर नहीं है. And because of discoloration, जो उसका कलर खराब हो चुका है, discoloration हो चुकी है, one has to look at it
closely, बहुत ध्यान से हमें उसको देखना पड़ेगा, to see what kind of landscape is described in it. तो बहुत ध्यान से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा लैंडस्केप, उसमें कैसा लैंडस्केप डिस्क्राइब हुआ है. By scanning it, the poet means to, what is the mistake here now? The poet simply wants to say, by scanning the poet means to say to pay attention. तो अगर आपने ये नहीं भी लिखना, आप इसको छोड़ सकते हो. You can skip this part, तब भी काम चल जाएगा. By scanning the poet means to pay close attention to the photograph. यहाँ poet सिर्फ हमें ये कह रहा है कि पोएम को बहुत क्लोजली अटेंशन पे करिए एंड यू विल बी, इस फोटोग्राफ को बहुत क्लोज अटेंशन पे करिए एंड यू विल बी एबल टू सी. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई इज विजिबल अंडर द सरफेस? अगेन, व्हाट इज द मिस्टेक? मैंने जानबूझ के ये जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं इनको रॉन्गली यूज किया है ताकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता पाऊं. सो वाई का मतलब होता है क्यों, तो यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, यहाँ आएगा What is visible under the surface? Under the surface क्या visible है? यहाँ दोबारा से what आएगा और what का मतलब होता है क्या, why का मतलब होता है क्यों. So what the poet wants to say here, क्या कह रहा है, क्या under the surface visible है? So the poet means to say that apparently she is in the lake under the surface, कि वो खुद lake में under the surface है. But here a doubt arises, एक doubt है जो arise हो रहा है, एक संदेह है जो हमारे मन में आ रहा है. If the speaker is in the lake, अगर speaker lake के अंदर है, who is describing everything? Describe कौन कर रहा है ये? So it means it is the reflection. अब ये रिफ्लेक्शन चाहे आप पोएट की मान लीजिए, चाहे आप नरेटर की, स्पीकर की मान लीजिए, या आप इस रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्शन ऑफ द हाउस मान लीजिए. इट इज द रिफ्लेक्शन दैट इज विजिबल अंडर द सर्फेस. तो ये एक रिफ्लेक्शन है जो सरफेस के ऊपर हमें दिख रही है और वही रिफ्लेक्शन हमें सरफेस के अंदर भी दिख रही है, अंडर द सर्फेस. It can be the speaker whose reflection can be seen, or it is the house that is visible in the water of the lake. So let's move on. And this is the last slide of today's video. And I hope you must have understood what is there in the poem, and I must have done some justice to it. And definitely, this is from my side. Creativity can kill the confusion and chaos. Be creative and cool. So it's better to be creative, to stay cool, rather than creating chaos and be disturbed with the chaos. So with this, I take leave of you, and with the promise that very soon I'll come again in front of you with another interesting video that is going to help you out in your final exams. Till then, stay safe and stay healthy. Thank you for watching. And if you're watching the video for the first time, don't forget to press this bell icon so that you're notified whenever I upload a video. Thank you very much.